Hello. Hi, hello, assalamu alaikum. और आज फिर एक vlog शुरू हो गया. This is, you know what? This is not Mama's real face, okay? You should have seen her about an hour ago, an hour and a half ago. She was screaming, shouting. I'm so tired. And then me and Malia had a discussion in the car and we just said, she's just getting old. Allah. Oh my God. I was just saying, the mum, so this is her being in a good mood because with you lot, she's in a good mood. No, but about an hour and a half. It's not that. But it is. Because about an hour and a half ago, right, she was, not at me, because she doesn't scream at me, but she was screaming at Malia. No, I was not screaming. She wasn't screaming, but she was saying everything under the sun, but in a very nice, in a very slow way. No. Look, Maliha said, I'm going to bring Siddiq a birthday cake, and then she said, why are you in a bad mood? And I'm not in a bad mood, but I don't know why she keep asking me why in a bad mood. I say I'm not in a bad mood, I'm tired. And she said, oh, please don't be in a bad mood. I say, okay. So you come, you do all the work, you do all the cleaning, all the cooking, and then I'm not going to be in a bad mood. So is that? And you know what? Yesterday, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी की ढोलक पे गई और बहुत मदद बाद ऐसी गैदरिंग थी. फिर ज़ाहिर बात है, फिर ढोलक गाने भी गाए. फिर so basically, mum is hangover, halal hangover. That's what they say. You know that? Halal. Ab halal hangover. Yeah. Do you know why? Basically, a lot of these women, when they have parties and everything, right? Please subscribe and click the bell to get notification. So halal hangover, right, is when you party all night without alcohol, obviously the Muslim way, and then in the morning you. ये मेरे साथ वही हुआ रात, क्योंकि मुझ में इतनी जान नहीं है. मेरी सहेलियाँ बार कह रही थी, क्योंकि स्ट्रिक्टली ओनली वुमेन्स होते हैं, तो बार वो कह रही थी. और मैं फुल ऑफ लाइफ हुआ करती थी एक्सीडेंट से पहले और कोविड-19 से पहले, तो वो मुझे बार खींच रही थी कि चलो आओ हमारे साथ डांस करो, ये करो. अब मैं एक हाथ से क्या करती, मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा था, क्योंकि मैं महफिल की जान हुआ करती थी और I was a little bit down as well. That's one thing. फिर हम लेट जब आई, फिर मुझे हेयर फीवर शुरू हो गया और मेरी हेयर फीवर की टैबलेट नहीं. You got hair fever as well? Oh yeah. और सारी रात मुझे हेयर फीवर होते हैं, मेरी जो बदन ऐसे. अच्छा, फिर वो शुरू हो गया. उसके बाद क्या हुआ कि सुबह उठी, मैंने कहा नाफिया बेचारी जब भी आती है तो मैं थकी होती हूँ, और ये आजकल आती भी कम है क्योंकि जॉब पूरा करती है. तो मैंने कहा इसके लिए पराठे बनाती हूँ. जब नीचे आई तो पता चला कि सिद्दीक की बर्थडे है. नाफिया का पोस्ट देखा, रात को सिद्दीक को विश किया था. नाफिया का पोस्ट देखा, मैं को ओह सिद्दीक की बर्थडे है, और खाना बनाने लग गई. तो खाना फिर मैं एक चीज़ नहीं बनाती हूँ, हालांकि मैंने स्ट्रिक्टली सोच लिया था कि सिद्दीक बहुत वरी होता है कि मैं ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ, ये है वो है, मेरे हेल्थ के बारे में वरी होता है. तो मैं कहा मैं नहीं बनाऊँगी. नाफिया भी डांटती है कि क्यों इतनी चीज़ें बनाती हूँ. मैंने कहा एक चीज़ बनाती हूँ. खड़ी हो गई. She doesn't. 8-9 चीज़ें बना. She doesn't know एक चीज़. और अब मैं बहुत थकी हूँ. अब मैंने पजामा पहना हुआ है, मैं कपड़े भी नहीं बदल रही हूँ, मेरे दिल का जोर नहीं है. मैंने नाफिया को कहा, नाफिया बस मुँह. Should I open that window? Oh. मैंने कहा नाफिया बस मेरे लिए एक चादर ले आओ, मैं चादर पहन लूँगी अपना. बस इतना कर दो. मैं कहा मैं अपनी नाफिया मेरे लिए चादर लेके आओ. मैं कहा मैं चादर पहन लूँगी, अपना पजामा उसमें छुपा लूँगी और थोड़ा सा ब्लॉग बना दूँगी अपने YouTube फैमिली के लिए, पोस्ट कर दूँगी. How are you liking the daily vlogs, by the way? आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने शुरू किया है. Oh, it's very hard for mom. It's very hard, लेकिन मैं कहती हूँ कि चलो आप लोग खुश होते हो तो मैं. Mama, your face is small, my face is that. क्योंकि आप उधर नजदीक हो, मैं दूर हूँ. My face is generally big anyway. Is it? Yeah. Okay, I never knew that. Alhamdulillah, Allah has given me a lot. My face is quite thin. No, your face. तो मैं पकौड़े बना लिए हैं अब, और I wish आप सब भी आके मेरे साथ खा लेते. Look at her, she's got pajamas on right now. बस मेरा काम. If it was up to mum, she would literally wear pajamas all the time. Why? What's wrong? Okay, girls, Dina.
Already time. Bread is ready. Come on, quick it. Otherwise it's gonna go more harder. Okay, I'll see you in a bit. I already did something. Shall I see you in a bit or shall I show you all this stuff? Amma bandi kam. Rocket sago, okay. That looks really good. It smells amazing. Yeah, वही बता रही थी. बाबू दल तो वक्त तेरे को होगा ना. Glass. Glass or glass? That's like me. Gilas? My mom used to say glass, and I pick it from her, so I never say glass. I say glass, and now my grandchildren say glass. My mom used to say busking. But for to boxing. She was very clever. You know what? There's certain words that I don't know how to say either. I need a cup. My one was prescription, but I sit learned it now. and learn. All done. My job is all done. Don't worry, she'll find something else for herself. No, boss, I'm gonna go happy birthday wish, and then that's it. Okay. That's my granddad. My granddad in my life. Bismillah. Okay, this is Malia. We all in bad condition, we all in pajama because we're sick and tired of dressing up. But we just looking for a reason to celebrate. Yeah. And there is always something, alhamdulillah, in our family. We just celebrate. We just get together and celebrate. Your skin looks good, Amma. I think every family Your should skin do that. looks good today. Is my skin? Yeah. I think it's a sweat. No, I did a little bit cleansing and Oh. okay, so see you on the table. Okay. So this Malia did it in quite. That's all right. Look, she did a pretty good job. There you go. That's a little thing. Nice, down to my foot. That's cake. Let's see what Mom's cooked. Ooh, white chicken. Chicken is generally white, but you know. Oh, khababu. Oh, curry. Amma, you made curry. Ooh. God damn it, is it akhtar? That's the Siddiq. Oh, Mum made all of Siddiq's favourites, so chicken tikka, stews, pakoras, and chicken soup right here. All yummy stuff. Mum's tired. My granddaughter is upset because Mika shouts. That's Hannah dancing. Let's see while you dance. Ooh, look at that! Maria's just gonna put the candles on. Maria, you did a good job, you know. Oh, good. I love the cake that you made. Oh, thank you so much. It took me quite some time. You know, those design skills they came through. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, old bat. Happy birthday to you. Look, you got an Xbox birthday cake. Come on. Oh. Happy birthday, babes. Oh my God. She has to make it less sentimental. No, that one. That's a good one. Where's it? Oh, you didn't see it down. Yeah. Oh, the same thing. This is from Mama and Papa. Oh, you got to read that one. We cried a little. Because he wrote it. Hey, kids, simmer down. Simmer I'm not down. gonna read it out loud. Of course you are. Oh, okay. Read it to yourself and let's see your reaction. No, don't go it. No. Yeah, I'll read it to myself. You literally look so dark here. Can't see you. Yeah. What'd you say? Babes is good. Babes. How are you doing?
want to see some tears? Yeah, God, Donnie, it ain't a birthday if you ain't seen You tears. can title it, My Son is Crying. An emoji. Mama gave you the most dirtiest look right now. She's like, she knows. Starts with a one. Are you listening, Amara? Could you hear? A one number. सो बर्थडे आप लोगों ने देख लिया है. मैं अब ऊपर आके सिद्दीक ने मुझे डांटा कि हर वक्त नाइट ड्रेस में रहती हो और इतने माशाल्लाह कपड़े प्यारे वो पहना करो, फ्रेश रहा करो. तो उसके डांट के बाद थोड़ा सा मैंने एक कुर्ता बदल दिया. वो सब नीचे गिफ्ट दे रहे हैं और मैं नमाज़ पढ़ने आ गई. तो मैंने कहा थोड़ा सा अपने हुलिया ठीक करो तो नीचे जाती हूँ. बस उसके बाद हम खाना वाना तो खा लिया, बस बैठ के ऐसे ही गपशप मारेंगे, कॉफ़ी पियेंगे. तो मेरा गला ख़राब हो रहा है पता नहीं क्यों. तो इंशाल्लाह उसके बाद पर सिद्दीक वगैरह, क्योंकि संडे है, संडे को सारे बच्चे घर चले जाते हैं और फिर मैं अकेली रह जाती हूँ. तो संडे इंशाल्लाह अभी शाम को तकरीबन 7-8 बजे मलिहा अपने घर चली जाएगी. अगर बच्चों का स्कूल नहीं होता तो फिर ये मेरे साथ रहते हैं, लेकिन स्कूल की वजह से, क्योंकि मेरी घर से इनका स्कूल काफ़ी दूर पड़ता है, तो पहले मलिहा सबसे पहले सिद्दीक और दीना चले जाते हैं तकरीबन 7-8 बजे के दरमियान. फिर नाफिया चली जाती है और फिर एंड में बेचारी मलिहा चली जाती है. सब घर को भी साफ़ कर लेते हैं मेरे साथ आजकल, क्योंकि मेरी तबीयत आजकल ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं होती. मेरा जो ब्लड लेवल है वो काफ़ी लो है, उसकी वजह से मुझे बहुत सुस्ती सी होती है. तो मेरे ख़्याल में व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि इतने लंबे लंबे व्लॉग बनाती हूँ तो फिर कुछ मेरे फॉलोअर शिकायत करते हैं. नहीं तो मेरी तो दिल होता है कि बस मैं तुम लोगों के साथ बातें करती जाऊँ. तो चले अब व्लॉग को एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे व्लॉग में. तब तक के लिए मम्मा को इजाज़त. अपने अलमान में अल्लाह आप सबको रखे, मुझे दुआओं में याद रखना. आप सब मेरे दुआओं में हो. अल्लाह हाफिज़.